We had a session on linear programming yesterday where we discussed the introduction part and we solved one or two problems based on that. And icing on the cake is that I have got two lectures today as well. सोने पे सुहागा हो गया. So let's start with the formulation based sums. If you were absent yesterday, be careful. समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, but just be careful. Wherever you are not getting the things, you are supposed to ask me. A factory manufactures two articles. तो अपने पास दो products है A and B. Manufacture article A, certain machine has to work for 1.5 hours. Machine has to work for 1.5 hours. Machine is our resources. याद करो. And in addition, a craftsman, that is a worker, has to work for 2 hours. Craftsman is a worker. कारागिर बोलते हैं हम इसको हिंदी में. To manufacture article B, for article B we require 2.5 hours on machine. And in addition, a craftsman has to work for 1.5 hours. पहले से ना इतना चीज समझ लेते, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन. इस चीज को मैं टेबल में कन्वर्ट करता हूँ और हालांकि इस टेबल का कोई मार्क्स नहीं होता है अगर आपको याद होगा तो. यहाँ पर मेरा आर्टिकल A, here I have my article B, here is my machine as a resource, and then craftsman as a resource. Article A requires how much hours of machine? So 1.5 hours. Okay. And craftsman required is again 2 hours. 1.5 hours of machine and craftsman has to work for 2 hours. ये article A का हो गया. For article B, machine has to work for 2.5 hours. Machine में 2.5 and craftsman 1.5. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, perfectly okay. So preferably put the products in the columns so that it becomes much easier to work out the calculations, nothing else. Next we have, in a week the factory can avail of 80 hours of machine time. This is my supply. मेरे पास machine hours कितना available है? सर 80 hours available है machine का. मेरे पास machine का 80 hours available है. And 70 hours of craftsman. आगे दिया है profit of each article A is 15 rupees. Here comes my profit. For article A it is 15 rupees. And for article B it is 10 rupees. Question is, find how many of each kind should be produced to earn the maximum profit per week. Formulate the problem as a linear programming problem. देवी और सज्जनों, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, मतलब इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. ये जो हमने किया अभी इसको बोलते हैं टैबुलेशन, इसको फॉर्मुलेशन नहीं बोलते. इसका कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है. बच्चे को बहुत उम्मीद रहता है कि भाई इतना बना दिया तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा. नो मार्क्स फॉर दिस. This is purely your working note or your own calculations or your own presentation or rough work you can say. ये नहीं भी करेगा main exam में तो भी चलेगा. I won't deduct your marks because there is no marks awarded for this section. Now comes the formulation wala part. Sejal, I think you are absent in the previous session. Assuming you are there in today's session. The first thing we are going to do is we are going to put the assumption. The assumption. The question is, how much should I make of article A and article B? हम लोग assumption लेंगे, let x units of article A and y units of article B are manufactured. That is our assumption. The first thing we do is we go for the objective function now.
What is the objective function? So we have got profit here. So profit will be maximized. Maximize the profit. Maximize, comma, profit, comma, Z. Objective function is always denoted by Z. This is my profit per unit. 15 रुपीज मेरा प्रॉफिट पर यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाय मैं आर्टिकल लेकर कितना यूनिट्स बना रहा हूँ. सम आई एम गोइंग टू मैन्युफैक्चर x यूनिट्स ऑफ आर्टिकल A and I am going to manufacture y units of article B. So what I need to do, I need to frame an objective function. How much profit I will earn by selling x units of article A. सर आर्टिकल ए का x यूनिट्स बेच के मुझे पर यूनिट 15 रुपीज प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. सर नंबर ऑफ यूनिट्स हमको पता ही नहीं है, वो तो हमने एज्यूम किया है. हाँ भाई, जो एज्यूम किया वही लिख दो. हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस, सर आर्टिकल बी का प्रॉफिट कितना है 10 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी यूनिट्स y. तो 10 मल्टीप्लाइड बाय y. ये हो गया मेरा टोटल प्रॉफिट. पर चलो, अच्छा टोटल प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन कुछ कंडीशंस है बॉस. मुझे मुनाफा तो कमाना है, आई वांट टू अर्न द प्रॉफिट. पर अपने पास मशीन का टाइम लिमिटेड है, अपने पास क्राफ्ट्समैन का टाइम लिमिटेड है. इन्हें कहते हैं भाई और बहनों कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स वो बंधने होती है जो मुझे रोक देती कुछ करने से, या वो मुझे पूरी तरीके से करने नहीं देती है. मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है या पैसे कम है, इसलिए मैं सिर्फ इंडिया घूम रहा हूँ. ये क्या हो गया सर? पैसे का कंस्ट्रेंट आ गया. आई वॉन्ट टू रिजाइन माई जॉब बट आई हैव ए फैमिली टू लुक आफ्टर. अगेन देयर इज ए कंस्ट्रेंट. I want to buy new mobile but I don't have that much amount of money. Again बजट का कंस्ट्रेंट आ गया, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट. तो यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट तो कमाना है, जितना हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, लेकिन भाई और बहनों उसको कमाने के चक्कर में मुझे इस बात का भी ध्यान देना है कि भाई मेरे पास जो मशीन का टाइम है वो सिर्फ 80 आवर्स है और क्राफ्ट में मेरे पास सिर्फ 70 आवर्स है. तो अब मैं क्या करूंगा सर? अब मैं करूंगा, इनको यूज करके मुझे बताओ, अगर मैंने मशीन आवर्स यूज किया तो एक मशीन के एक आर्टिकल ए के पीछे, एक यूनिट के पीछे कितना टाइम लगता है? 1.5. दिस इज द टाइम पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करो. यहाँ पे आएगा 1.5x प्लस. तो ये मशीन टाइम किसका हो गया? आर्टिकल ए का. आर्टिकल बी में कितना टाइम लगेगा सर? 2.5 इंटू y. अब मेरा जो टोटल टाइम है भाई और बहनों वो कितना है? मेरे पास सिर्फ 80 आवर्स है. मेरे पास सिर्फ 80 आवर्स है. तो भाई साहब मैं 80 आवर्स पूरा यूज कर सकता हूँ या मैं उससे कम यूज कर सकता हूँ, मैं उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता. सिंस माय सप्लाई इज 80 आवर्स, आई कैन नॉट एक्सीड 80 आवर्स. अगर मेरे जब में 80 आवर्स ही है तो भाई मैं 80 आवर्स खर्चा करूंगा या उससे कम करूंगा, उससे ज्यादा तो करूंगा नहीं. उसके लिए साइन क्या आएगा सर? लेस देन इक्वल टू 80. मेरा दूसरा कंस्ट्रेंट सर 2x प्लस 1.5y. 2x प्लस 1.5y लेस देन इक्वल टू 70. दो कंस्ट्रेंट्स आ गया सर, एक मशीन का, एक क्राफ्ट्समैन का. और कोई कंस्ट्रेंट है क्या? ऐसा कुछ बोला है क्या? इतना ही बेच सकता है, इससे ज्यादा नहीं बेच, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है सर. यू हैव नॉट सेड एनीथिंग रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स. अच्छा, लास्ट में आएगा सर अपना समथिंग कॉल्ड एज नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. अब ये क्या होता है सर? व्हेन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, when we solve the problem based on linear programming, we are going to find the value of x and y. What is x? So number of units of a. What is y? Number of units of article b. So क्या ये अगर मेरा वैल्यू 0 आता है तो मैं समझ सकता हूँ कि x 0 आया मतलब आर्टिकल ए बनाओ, सिर्फ आर्टिकल बी बनाओ. y 0 आया मतलब आर्टिकल बी मत बनाओ, सिर्फ आर्टिकल ए बनाओ. लेकिन अगर मेरा वैल्यू -5 आ गया, x -5, so can I make -5 units? Can I make -1 units? No sir, पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है. इन दो सिनेरियोज हम लिखते हैं x और y कैन नॉट बी नेगेटिव.
भैया x और y नेगेटिव नहीं हो सकता है मतलब वो जीरो हो सकता है, नहीं तो वो मोर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ x एंड y मोर देन इक्वल टू जीरो। I will write x and y more than equal to zero. That's it. Got my point? Got my point very clear. These are called as the non-negativity constraints. इन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट्स। चलो इतना देखो आराम से, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन। शूट फास्ट। एनी क्वेश्चंस? एक गायब है कोई तो आज फिर से। You only have 11 today. अनिकेत है क्या आज? अनिकेत गायब है। यस सर। अनिकेत है किधर है? हाँ ऊपर है। Who's absent? I don't know who is absent. Only the solution wala part, not the question, please. And making of this table is purely optional. I told you the other way around, how we can work out this without drawing the table as well.
डन। Yes, sir. चलो भाई, I will assume all are done. Question number 2. Let us read the question again. ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब मैं बिना टेबल के बताता हूँ कैसे करना है। इट सेव्स द टाइम, नथिंग एल्स। मैं बोलूंगा तो मैं बिना टेबल के ही करूंगा। जब मुझे पता है कि मुझे ये सब टेबल्स का एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला है, तो आई वोंट लाइक टू स्पेंड द टाइम इन द एग्जाम ड्राइंग ए टेबल एंड वेस्टिंग माय टाइम। अल्टीमेटली यू आर डूइंग समथिंग कॉल्ड एज मैथ्स। Maths में time is a major issue, so time management is equally important. While teaching, I'll always tell you how to write the exams. Exams में कैसे time manage करना है, कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है. Ultimately, what happens, no matter how much I teach, what you do in that 2 or 3 hours of the exam is the most important thing. मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, मैं कितना भी तुमको मेहनत कर रहा हूँ, the moment you enter the exam hall or the moment you start writing the exam, that 2 or 3 hours of the exams are the most crucial time. नेट प्रैक्टिस तो आप बहुत कर लोगे, जब एक्चुअल ग्राउंड पे मैच खेलने जाओगे तब मालूम पड़ता है कि क्या होने वाला है. सो जस्ट बिकॉज यू नो ए पर्टिकुलर क्वेश्चन डजंट मीन दैट आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना ही है. एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का 2 तरीका होता है. एक तो मार्क्स फैक्टर देखना पड़ता है, दूसरा देखना पड़ता है टाइम फैक्टर. There is something called as effort to reward relationship. I don't know how you look at it. I always look at it in the effort to reward relationship. Topics like assignment, topics like sequencing, okay, topics like linear programming formulation problem, they are quite easy, they are less time consuming and they will give you more marks. कम टाइम में ज्यादा मार्क्स मिलेगा, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स मिलेगा. बी लाइक ए बिजनेसमैन. बिजनेसमैन थिंग्स लाइक कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमाओ. वैसे ही आपको ऐसे ही सोचना कि भाई मुझे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है. And this is what is something that is done by the smart students. Okay, I want students who should be smart rather than hardworking. Sincerity is one thing, but we today don't want only the hardworking students. We want students who are smart working. Okay, so come to the next part now. Akhil Corporation produces 2 products. Product profit for product A is 60 and for product B is 50. I'll do this sum and then I will give you one sum for 2 people to solve it. So now I have got 2 products here. Product A, product B. So sorry. Now there comes my profit. How much is my profit? So my profit for product A. My profit for product A is 60 rupees. And profit for product B is 50 rupees. Each must pass through 2 machines, P and Q. So एक मशीन 1 और मशीन 2 था लास्ट सम में. प्रीवियस सम में मशीन और क्राफ्ट्समैन था. यहाँ पे मशीन P और मशीन Q की बात हो रही है. हमें तो सर हमें क्या, इन्होंने कहा है प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 10 मिनट्स ऑन मशीन P. प्रोडक्ट ए मशीन P में 10 मिनट लगता है और मशीन Q में लगता है सर 8 मिनट. ठीक है, आगे machine P is available 5 hours a day, while machine Q is available 3 hours a day. So machine P 5 hours available है, machine Q 3 hours available है. मुझे लगता है क्वेश्चन में एक लाइन मिसिंग है, मैं ऐड करता हूँ, जस्ट वेट.
product B requires 15 minutes on machine P and 5 minutes on machine Q. एक लाइन मिसिंग था क्वेश्चन का, मैंने ऐड किया दिस लाइन, ध्यान दो इस पे। प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 15 मिनट्स ऑफ मशीन पी। सब प्रोडक्ट बी में लगता है 15 मिनट्स मशीन पी पे, मशीन क्यू में लगता है 5 मिनट्स। ठीक है सर। और ये अपने पास इसका सप्लाई है, या मैं इसको बोल सकता हूँ अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, whatever you want to say you can say। ठीक है सर, हो गया। आता का है, क्या करना है भाई बोलो सर। अब हमें इसको फॉर्मुलेट, अच्छा सर और एक लाइन छूट गया आपसे, आपने पढ़ा ही नहीं है, हम फिर से एक बार पढ़ते हैं, हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। उसके पहले मुझे चार्जर ज्वाइन करने को, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। हाँ जी, क्या बोल रहा था मैं, हाँ सर, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है सर, अभी आपने एक लाइन छूट दिया है या छोड़ दिया है। यहाँ पर एक लाइन है, देखो, द कंपनी मस्ट प्रोड्यूस, कंपनी मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। उन्होंने कहा कि भाई जो प्रोडक्ट ए है ना, इसका एटलीस्ट 2 यूनिट्स बोला है। ठीक है सर, इसका एटलीस्ट 2 यूनिट्स कहा है, और प्रोडक्ट बी का कहा है सर एटलीस्ट 5 यूनिट्स। मतलब एटलीस्ट का मतलब समझ लो, दिस इज द मिनिमम क्वांटिटी वी हैव टू मैन्युफैक्चर। ओके, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। आई विल कॉल दिस एज द minimum requirement। okay, I hope you are getting the things very clear। क्वेश्चन समझ में आया है सबको? अब इसको फॉर्मुलेट कैसे करना है? सबसे पहले तो सर एक चीज ध्यान में दो आप, सर यहाँ पे आपने प्रॉफिट रुपीज में लिया, ठीक है, मशीन का टाइम आपने यहाँ पे 10 मिनट से 15 मिनट्स लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपने 5 आवर्स लिया, तो मैं उसको 5 आवर्स नहीं लिखूंगा, मैं उसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करके उसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा। ओके, यहाँ पर भी मैं 60 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं कर दूंगा 180 मिनट्स। ठीक है, अब सही है सर, अब सही है। हाँ, अब बोलो सर, सबसे पहले क्या लिखूं? लेट x units of product A and y units of product B are manufactured या produced। हालांकि मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस में भी डिफरेंस होता है, मैंने बताया था आपको। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा, प्रॉफिट दिया कि कॉस्ट दिया? सर प्रॉफिट दिया, कॉस्ट देंगे तो मिनिमाइज होगा, प्रॉफिट दिया तो क्या करेंगे सर? मैक्सिमाइज करेंगे। चलो करते हैं मैक्सिमाइज। अरे मैक्सिमाइज नहीं, मैक्सिमाइज लिखना है बेटा। मैक्सिमाइज प्रॉफिट कॉमा जेड इक्वल्स टू, सर कितना प्रॉफिट है पर यूनिट? 60 रुपीज है, इंटू कितना यूनिट सर अपना यहाँ पे? सर हमने यहाँ पे लिया है x यूनिट्स, और हमने यहाँ पे लिया है y यूनिट्स, तो मैं लूंगा मैक्सिमाइज द प्रॉफिट 60x प्लस 50y, सब्जेक्ट टू, भाई और बहनों, सब्जेक्ट टू व्हाट आर माय कंस्ट्रेंट्स। मेरा सर 2 कंस्ट्रेंट्स है, एक मशीन पी और मशीन क्यू का, ये मेरा रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट है सर। 10x, ये 10 multiplied by x is the time on machine P, 15 into y is the time on machine is the time on machine P। इन दोनों को ऐड करेगा तो टोटल टाइम मिलेगा। सब्जेक्ट टू 10x प्लस
15y, तो मेरे पास टोटल टाइम कितना है सर 300 है, तो लेस देन इक्वल टू 300 मिनट्स। मेरा दूसरा कंसर्न मशीन क्यू का 8x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू कितना सर, लेस देन इक्वल टू 180 मिनट्स। सर और दो कंस्ट्रेंट्स आएगा, तो ये क्या बात होगी सर, और कौन सा कंस्ट्रेंट हो गया ना, दो कंस्ट्रेंट्स भैया, वो मशीन पी और क्यू का हो गया। हमें और एक चीज बोला गया था कि भाई मशीन अपना प्रोडक्ट ए का मिनिमम 2 यूनिट बनाना पड़ेगा। मिनिमम का मतलब होगा कम से कम दो, मतलब दो या दो से ज्यादा की कम से ज्यादा। तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ए का हम लोग कितना यूनिट्स बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं एक्स यूनिट्स, तो एक्स एटलीस्ट बोला है या मिनिमम बोला है, तो हमेशा मोर देन साइन आएगा, मोर देन इक्वल टू। सेम वे वाई मोर देन इक्वल टू आएगा सर 5 यूनिट्स। टोटल 4 कंस्ट्रेंट्स हो गया बेटा, 4 कंस्ट्रेंट्स टोटल हो गए अपने। सबसे लास्ट में अपना फेवरेट आएगा, हमेशा लिखते जो अपन, x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल्स टू 0, दैट्स इट, खत्म। एनी क्वेरी स्टिल हियर, लेट मी नो। एनी क्वेरी स्टिल हियर, लेट मी नो। Okay, in case I get disconnected, we'll restart the session again. Huh? Shoot now, all of you.
Any questions?